Hey guys, it's good to see you again on our channel देसी कारीगर। दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा देसी जुगाड़ करके कुछ क्रिएटिव आर्ट्स लाते रहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस से बहुत कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एज ऑलवेज क्रिएटिव एंड यूनिक आइडिया ऑफ मेकिंग टॉय हैंड पंप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो डिफरेंट साइज की स्ट्रिंग लेते हैं। अब हम हैंड पंप का आउटलेट बनाने के लिए छोटी स्ट्रिंग का यूज करते हैं। वीडियो को फॉलो करते हुए इसे काट लेते हैं और सैंड पेपर से इसके सरफेस को स्मूथ करके फास्ट ग्लू की हेल्प से इसे बड़ी स्ट्रिंग पर फिक्स करते हैं। अब दोबारा बड़ी स्ट्रिंग को लेते हैं और वीडियो को फॉलो करते हुए इसके हेड को काटकर सरफेस को स्मूथ करते हैं। हमें स्ट्रिंग के सभी पार्ट का यूज करना है। सबसे पहले इसकी रबर को वीडियो के अकॉर्डिंग निकालते हैं और इसमें एक होल करते हैं ताकि पानी ऊपर आ सके। होल करने के बाद रबर को इस तरह फास्ट ग्लू से फिक्स करते हैं। ध्यान रहे कि बड़ी स्ट्रिंग का नोजल सेंटर में होना चाहिए। यदि नहीं है तो वीडियो के अकॉर्डिंग इसे बीच में लाते हैं। नोजल को फिक्स करने के लिए एम सील का यूज किया गया है। एम सील से यूज जानने के लिए आप हमारी वीडियो
हाउ टू मेक गार्डनिंग वाटर कैन को फॉलो कर सकते हैं। अब सभी पार्ट को वीडियो के अकॉर्डिंग जोड़ लेते हैं। हैंडपंप का हैंडल बनाने के लिए हम टूथब्रश का यूज करते हैं। हैंडल को फिक्स करने के लिए हम मेटल की पट्टी का यूज कर रहे हैं, जिसे हमने एक डियो की बोतल से कट किया है। हैंडपंप के मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए इसके नोजल पार्ट और रबर के ऊपर लोहे के छर्रे का यूज किया है, ताकि पानी रिटर्न न जाए। अब हमारे हैंडपंप को एक बॉक्स पर एम सील की हेल्प से फिक्स करते हैं। नाउ हमारा टॉय हैंडपंप रेडी है। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। Guys, we hope that you liked our video.
So don't forget to share it with your friends and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you for watching.